Now we proceed with the Deep Prajwalan. दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते Now I would like to invite the teacher for the inaugural song. So should I start? I'm audible. Yes, Titisha, you have please start. Okay. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपा निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जोगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाई पालवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्याण पालख होवे ताइकड़ा चले ना कि विसचियारा होइए कि वकूड़े टुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया Thank you. That was very melodious, Titisha, and I would request everyone to please switch on their cameras. So before starting the event, I would like to welcome Dr. Veena Singh ma'am, our university club coordinator, the lady who is behind this whole initiative. She is the one because of whom this initiative has been such a success, and we are able to raise so much funds that have helped the people who are in need. So I would like to invite Dr. Veena Singh ma'am to shower her blessing on us. Thank you so much, and I'm really proud to share you here now. We are all for the event, and I would like to welcome on behalf of Sri Ram Sarup Memorial University all the students as well as coordinators over here who make this entire event very successful. Our motive, that is healing Hindustan. Under this initiative, now we have some quizzes and different kind of initiative to be taken and to make you more competitive in every field. So this is our small initiative which we are taking up, and this is one of the dream project of our Pro-Chancellor ma'am.
Engineer Pooja Agrawal ma'am. So I would like to just welcome you all in this platform, and with my full spirit, I would like to congratulate the team who had trying their best to make the event fantastic. And I have seen and gone through your entire promos and the videos. I was unbelievable to believe that Satyam was there in some different look, and all of you are. So all the best, Satyam. Keep going. You are having a fantastic kind of things. Okay, just continue. Thank you so much, and welcome you all for this event. Continue. All the best. Thank you so much, ma'am. Now over to Janvi. A very good evening to one and all present here. It is a great pleasure for me to welcome our guest speaker, Mr. Sai today, who is going to talk to us about cryptocurrency, a brand new technology which has already illustrated its ability to disrupt the global financial system. Our speaker, although, is a crypto enthusiast, product and growth manager at Nuo. Thanks, Janvi, for this wonderful welcome. We are highly obliged to have you with us, sir. But before that, let's hear what our volunteers and Bhaiyaji wants to say about cryptocurrency. Let's hear their views. भैया जी ये क्रिप्टो क्या होत रहा है? बाग पूर्वक प्रणाम कर पहले। अरे भैया जी प्रणाम प्रणाम। अब बताओ क्या समस्या तुम्हारी? हम कह रहे ये क्रिप्टो क्या होत रहे? कटाई पूर्वक को बैठो बताते हैं तुमको। सही जगह आयो। जैसे तुम पहले पैसा भेजा था ना ऑनलाइन, पहले नोटन में जाए था, आप उनमें सिक्कन में जाइए। वही खातिर सरकार ने नया सिक्का निकालिए, सिक्कन में जाइए। पर वो पिंटुआ बता रहा कि वो ये सिक्का ही खरीद लिया है और इनमें बहुत कमाई है। अबे त्यागी सुन लो क्या कह रहा है। क्या पैसा पैसा खरीदी। अब हम तो पहले बचपन में चूरन वाली नोटें ना खरीदे थे। वैसे जन बा सरकार अब नया खिलौना, तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, तुम छोड़ रहे हो। बता रहे हैं तुम्हारे पापा को। ए पिंटुआ तुमको कुछ और नहीं पता है। भैया जी बताए रहे ये क्रिप्टन सब फर्जी है, तुम सारा पैसा डुबाई लियो इमा अपना। हमारा तुम्हारे भैया जी को कुछ पता तो होता नहीं है, हवा में बातें करते रहते हैं। तुम्हें हीलिंग हिंदुस्तान के बारे में तो बता ही थे। उसमें हमारे भैया जी और दीदी जी जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी पर करवा रहे इवेंट 2 जून को। वैसे ही इस वक्त घर में बैठे बैठे मक्खी मारते हो, आ जाना, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अपने भैया जी को भी ले आना जो हवा में बातें करते रहते हैं, ठीक है? और गोलू आ गए? हाँ पिंटुआ आ गए। चलो बढ़िया किए। अब ध्यान से सुनना सब कुछ और अच्छे से समझना। बाकी कोई दिक्कत हो तो आखिरी में पूछ लेना, ठीक है? आप सभी ने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। इसी तरह से 5000 अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड मनी है जो कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आज भी लोग क्रिप्टो करेंसी में बिलीव नहीं करते हैं, उन्हें उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं पता है। बट इन फॉरेन कंट्रीज यू कैन बाय कमोडिटी यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टोकरेंसी इज़ नॉट लाइक द फिएट करेंसी। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है और जो किसी भी कमोडिटी पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि गोल्ड। फिएट मनी गिव्स सेंट्रल बैंक ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। जैसे कि इस नोट की वैल्यू 100 रुपये है। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ऐसा कहती है। In November 2016, the Indian government introduced demonetization, under which rupees 500 and 1000 old currency notes were banned. They had no value then. But in cryptocurrency space, there is no such institution which decides its value. The complete value depends upon market supply and demand. More the demand, more the value. Less the demand, less the value. क्रिप्टो एक पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जहां कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो कि ट्रस्ट पे नहीं क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पे बेस्ड है।
जैसे कि ये बिटकॉइन है, ये कोई फिजिकल कॉइन नहीं है, ये कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो कि हर ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है। आज इस दुनिया में कई सारे ऐसे कंप्यूटर्स प्रेजेंट हैं जो कि ये डिजिटल लेजर मेंटेन करते हैं। इन कंप्यूटर्स की वर्किंग समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको रिवॉर्ड में कुछ मिलता है। इस तरह जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उन सभी कंप्यूटर्स को उसकी डिटेल 10 मिनट में मिल जाती है और उन सभी कंप्यूटर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जो कंप्यूटर सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन्हें रिवार्ड में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। ऐसे कंप्यूटर्स को माइनर कहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे पावरफुल कंप्यूटर को सेटअप करते हैं और लगातार वो ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। जैसे एक अकाउंटेंट एक ट्रांजैक्शन के पेज को अप्रूव करके उस पर साइन करता है, वैसे ही ये कंप्यूटर्स हर ट्रांजैक्शन के पेज को अप्रूव होने पर उस पर अपना सिग्नेचर ऐड करते हैं। इसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। ब्लॉक्स ऐसे ही बनते हैं। ट्रांजैक्शंस, प्रूफ ऑफ वर्क, पिछले ब्लॉक की कॉपी, और ऐसे ही ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, रशियन डॉल्स की तरह। इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड की कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। After demonetization in India, many took cryptocurrency seriously. जिनमें से काफी genuine investors थे, but few people started abusing the system for illegal money laundering. After knowing this, RBI issued a notice to several banks stating that no bank will provide services to cryptocurrency exchange. The Supreme Court says, though this step was unconstitutional, but since it involves banking, so RBI has the right to regulate. So the future of cryptocurrency in India is completely unpredictable till there are strict rules passed in the Indian Parliament. नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और महफूज होंगे। इस मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे को साथ लेकर और संभल कर आगे बढ़ना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीवन कांट हेल्प एवरीवन बट समवन कैन हेल्प समवन। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमारे क्लब बिजनेस कंसल्टेंसी क्लब और बिजनेस बस क्लब ने हीलिंग हिंदुस्तान के अंडर एक छोटे से फंड रेजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सभी से अनुरोध है उस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमें फंड रेज करने में हेल्प करें, ताकि हमारी यूनिवर्सिटी उन सभी ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सके जिनका इस समय कोई सहारा नहीं है। धन्यवाद। Now, I would like to invite our guest speaker to come up and share his experience with us. Entire breaking up the silence, I just wanted to say one thing, that our guest speaker is also, I think, is trying to make it find out the crypto is where, isn't it? Definitely, ma'am. Yeah, that's why he is not joining, and somehow he is collecting a lot of data regarding the cryptocurrencies. As Ram Sarupian are here with a lot of questions and queries regarding cryptos. I am so excited to ask a question with him. Can you, Shreya, tell me where he belongs to and which area? Till then, my other buddies are going to locate his current location. Definitely, ma'am. Our speaker is very talented and he is a growth and product manager at NUO and really a great crypto enthusiast. Okay. I think Bhaiya ji have also a lot of questions. He is continuously watching this crypto program, isn't it? अरे हमको तो बहुत कुछ पता है। ये पिंटू हमको लेके आया यहाँ पे, बोला कि आपको कुछ नहीं पता है। Okay. And Rishabh, I think you are also excited to know that about. Samay, are you able to identify where is our esteemed guest person, with which name he is now?
Ma'am, I am searching. He is not here yet. Okay, and that's what I am also locating. Please, somebody call and locate his current location. Otherwise, I will send it to STF about his location, isn't it? He's here. He is here. Okay. Now, after just naming with the STF, he is here. Okay, great. Great, just kidding. Thank you so much and welcome to you. Am I audible, sir? Say, Teja. Sir, please unmute yourself. Yeah, someone is muting me up. Okay, actually, this is like actually you're going to tell us about how to make crypto. That's why we used to make you mute, unmute time to time, according to our benefits, what we are going to get it, isn't it? Welcome to you here in this platform. Yeah, please continue. Over to you and please continue. Thank you all, and it's wonderful talking to you all, and thanks for having me here. Yeah, it's definitely good to see such enthusiasm from institutions and also from individuals, basically to understand crypto and to understand blockchain in general. So today I'll be sharing you a few insights about blockchain and cryptocurrency. So please give me the access of screen share. I'll share my screen and show you the slides and explain you what it's all about. Veena ma'am, please make Sai Teja sir a co-host. Yes, I had made him a co-host. He can. Can now able to share his slide? You can, please. Perfect, perfect. I got the access. Before you're going to start, I would just like to give you a warning for this. There is two people around you, the Bhayaji and another one. They were very much smart. So be aware and smart, and a very smart person to tackle them. Okay, all the best. Yeah, definitely. I can handle them. Yeah. Hey all. So today let's try to understand few things around blockchain technology and what are the most blockchain terms you need to understand when you are in the blockchain space, and how smart contract works in general. And yeah, basically what are the use case and daily use cases that are happening in the blockchain space and the cryptocurrency space. Yeah, so first let's try to understand what exactly blockchain is. So blockchain is, in general, it's not too technical. Let's keep it very simple. It's just a chain of blocks. Okay, so all these chains are like chunked in different blocks. So let's say if I want to make a transaction to someone from your institution, so all these transactions will be maintained in a single ledger, and all these transactions are shareable to with each other. So that is why it's called a distributed ledger. So it's basically open, distributed, and as we are maintaining different transactions in a single ledger, so it's also a single ledger, and it's permanent. So no one can actually change the blockchain transaction, and no one can forge it. So it's completely transparent, and it's stored in the blockchain. So to keep it very simple in terms of technical term, I think you might have heard about the centralized servers and how they work, right? So instead of centralized server keeping all the data of like whatever the transactions happening in the ecosystem, so it's a decentralized storage system where each and every individual transaction are stored. Yeah. So how it works? So let's take this as an example. So user requests for a transaction, and all these transactions are like stored in a block, and this block is broadcasted. So I think prior to this, someone told about the mining stuff, where you will get reward in terms of Bitcoin for mining a particular block, right? So this is what exactly happens. The transaction gets stored in a block, and the block get broadcasted. And after block get broadcasted, so it will be stored in the form of nodes. And once node verifies this particular block, it will be chained into the blockchain. So this all together like forms a blockchain. These are like chain of blocks according to the timestamp. So the benefits of this blockchain technology. So basically, it's basically much faster than the traditional finance ecosystem. Let's say if you want to transfer money from India to US, so you'll end up frustrated, and it will take a lot of time. So it will take you around 5 to 6 days to transfer to US, and also
there is no transparency in the transactions that are happening, correct? And then all these transactions are immutable. So once the transaction is done, you can't reverse the transaction. And it's more secure, and it's completely decentralized. So each and every transaction is traceable. And so it's basically shared and distributed ledger. And there are two types of blockchains in general. So one is the public blockchain, and second one is the private blockchain. So public blockchain is where all the transactions and all the devices are connected to each other without no central authority. So if you want to be part of the chain, then you can definitely go download software and be part of the chain. And every transactions can be traceable, and each and every node have the same set of transactions in the ecosystem. And the private blockchain is slightly different in comparison to the public blockchain. So in the private blockchain, a centralized entity will decide whom to give the access to. So basically, if you are only authorized to participate in the ecosystem, then you can only get the transactions and details happening on the blockchain. So this is the basic difference between the public blockchain and the private blockchain. So you can call it public blockchain as a permissionless, and private blockchain as a permission. So you need the permission to enter into the ecosystem. Yeah, and the networks are like three different types. So one is the centralized and decentralized and distributed. So here you can see clearly that the centralized network is connected to one single entity who can have the access for all the things, let's say in the cryptocurrency ecosystem. One centralized authority will have access to all the transactions that are happening in the ecosystem, right? And the second one is the decentralized network, where no single server or like authority controls the ecosystem. And the distributed network, as said before, so each and every node that are connected in the blockchain, these are independent. So one node is in, if you consider this in the traditional system, you can say that one server is in here in India, who is responsible for the ecosystem, and one server is completely located in different location. But all these nodes having the same different set of transactions. So there is no change between the transactions that are present in the ecosystem. So basically these are interconnected, right? Yeah, I think, so let me know how many of you like heard about all these terms. If not, like I can go through, or else like I can skip it. Let me know in the chat so I can see the response. Hello. Yeah, can someone help me with the data? Hello. Hello. Yes, sir. Can someone help me with the data? So how many of you like guys understand about different terms in the blockchain system? Or should I skip it? So you should actually explain. Yeah. So now are you guys able to see my screen? Yes, sir. Perfect. Yeah, so these are basically different terms that are present in the blockchain ecosystem. So if you are more into investing side of things, then you should understand few things on airdrop, altcoin. So altcoin are basically, so I'll explain you the cryptocurrency in general. So till now you have seen what exactly blockchain is. So cryptocurrencies are the assets that are being deployed on top of the blockchain technology, right? So if you take Bitcoin, so Bitcoin came into existence just because after the crash in the real estates back in 2008, where there was no much liquidity present in the market, the financial market. And then you have to actually wait for long durations to get back your liquidity, the invested amount in the real estate. So there when one random developer called Satoshi Nakamoto came and proposed a model where like he said, if you want to transfer money from one entity to another entity, then you no need to have the dependency on the intermediaries or third parties
like banks, to transfer the money. So it can be done in a P2P model in a much faster way. So all the Bitcoin transactions will actually be done in under 10 minutes. But in case of banks, it will actually take more than 5 to 6 days if you want to transact in the cross-border transactions, right? And yeah, this is why like Bitcoin came into existence, and later then many different cryptocurrencies came into existence, like Ethereum. Ethereum whole concept was basically why like we need to restrict to only P2P model. Then Vitalik thought about, I can make an ecosystem where one can deploy decentralized applications uh, which can be used in a decentralized way and without any intermediaries, correct? So now if you can check the applications that are being deployed on Ethereum, there are like more than I think 10,000 applications on top of Ethereum. So these are completely decentralized, and you only need a Web3 wallet to interact all these applications. You don't need the email ID, password kind of ecosystem. So all you need is Ethereum wallet address, and you can directly interact with any of the applications. These are the like few different uh, concepts that are coming into existence, and now I think more than 10,000 cryptocurrencies are there in the market with different concepts underlying the blockchain technology. And yeah, let me go forward and explain you some more important concepts. Yeah, if you have thought about the mining concept, the proof of work concept, which you guys explained this before, saying that all these different transactions are being approved by network of executors, right? These executors are nothing but the computers in which the software of mining has been installed. Okay, so all these softwares will solve a puzzle for actually verifying a transaction, right? But all these transactions can be forged, all these transactions can be manipulated, but only if there is a 50% uh, power or authority with the miners. Okay, so this is called the 51% attack, where like if the miners are able to get the authority of 51% of the whole transactions that are happening in the chain, then they will be able to actually retrace or like do malicious activity in the ecosystem. But until and unless if there is no 51% authority or like centralized authority with the miners, then they won't be able to do that. And all these transactions are like decentralized, and no one knows like who is actually running a node. So this is not completely possible as of now, right? So now let's discuss about one important concept that is in the blockchain ecosystem, that is smart contracts. And so smart contracts are basically the code which you write in Solidity language, especially in the Ethereum ecosystem, and there are different languages for different blockchain. So you can, so I'll give you the traditional example. Let's say uh, if you want to lend someone some money, so this generally happens in the students' day life, right? So some of your friends ask for money, and they will actually end up not returning to you. But if you deploy a smart contract saying that like if you can give the inputs of when you need the money back, and who is responsible for it, so all these can be coded in a smart contract, and smart contract will be automatically executed. So let's say if I'm lending money to someone from your institute, and I can mention in the smart contract saying that I lent X amount to this particular institution, and I need this money back in next let's say 1 2 years. Okay, so all this can be inputted in the smart contract, and smart contract will be automatically executed. Let's say so on time of execution, what will happen? So money will be credited or like debited from my wallet, and this will be credited to your institution, correct? And at the time of repayment, what will happen is, so the money will be debited from the institute and it will be credited in my wallet automatically. So all these can be possible in the smart contract.
right? So right now, like there are many use cases going on in the ecosystem. Like let's say you can store your files in a decentralized way, that is called record storing, trading activities, supply chain, mortgage, health services, IoT, real estate. So blockchain technology is getting executed everywhere now. And the key part is like you can code everything in a smart contract, which is decentralized and automatic. Let's get this. Yeah. So these are the like main areas where like blockchain is getting traction. Technology, media, law and crime. So in the law and crime, if I say all the record keeping process that is happening in the law law based storing, all these can be stored in a blockchain, completely decentralized and secure and transparent. So this is one of the most important applications that is going on now. And yeah, government is like doing a great job in terms of getting the agriculture and land details on top of blockchain. So many different applications are happening. So this is going to be a good thing if you are like early into blockchain, and if you know coding smart contracts. So you can be in the frontiers of the blockchain technology. Like you can consider this as the early stage of internet. Wait a second. Yeah, these are some more sectors where like blockchain is getting traction. Yeah, this is the most important thing. Web 3.0. So if I think many of you must be knowing about web 1.0 and web 2.0. So in web 1.0 season, where we used to have basic HTML and email structure, right? So I think many of you might used it, the Gmail first version. So it used to be very simple, not much attractive, and no much functionalities. But today there is a lot of difference, right, in the Gmail architecture too. So that is called Web 1.0, where there used to be only the static applications with no much interaction, and then came Web 2.0 with much more informative and interactiveness. Let's say Twitter, Instagram, YouTube. So now you are able to see videos. I'm able to present myself in the internet, on the internet, and you are able to tweet, follow some exciting news. All these things are happening in the Web 2.0. This is basically giving the functionality to Web 1.0, correct? And now the Web 3.0 is getting much more traction, because all you need is a single wallet. You don't need your email address, you don't need your password to actually interact with the decentralized applications, right? So all you need is one single Web3 wallet, where like you have some cryptocurrency to interact with the decentralized applications. So Web 3.0 is all about decentralization, private and secure transactions. Not about only the transactions, but storing data and interacting with different applications. So all these are happening in decentralized, private and secure way. Yeah, so these are some of the benefits of Web 3.0. So you can prevent monopoly, and basically create a secure network. And interoperability, as said, interoperability is the major use case of Web 3.0. So let's say in Web 1.0 or like Web 2.0 era, you need to have different email and password for different applications, correct? Which really bothers you a lot, because you might forgot your password, and you can end up not using that particular application. But in Web 3.0, only single extension, and that will help you to actually interact with many more different applications that are deployed on top of blockchain in Web 3.0. Correct. And as said, the permissionless blockchains are like available, and no interruption in service. So all these are like benefits of Web 3.0.
Yeah, so these are some of the areas where Web 3.0 is getting much traction. Remote jobs, browsers, messaging, storage services. So yeah, all these are like interconnected. Yeah, I'm done. Let me know if you have any questions. Let's have chit chat. Sir, could you please open your camera for a while? Yep. Yeah. Thank you so much, sir. हेलो यस सर, ब्लॉकचेन में आपका जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको मतलब हम किस तरह से समझ सकते हैं, मतलब क्या डिनोट करता है? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, फिर से पूछिए। हेलो, या क्लियर है सर आवाज? हाँ, अभी क्लियर है, अभी पूछो। सर, ट्रांजैक्शंस जो आपने बोला, ये ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं? अगर कोई एएसआईसी माइनर कंप्यूटेशन अपना कर रहा है, सॉल्विंग कर रहा है इक्वेशंस की, तो वो चीज उसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, या हम एक कोई पैसिव माइनिंग कर रहे हैं उसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, या हमने कोई एक्सचेंज करा, कोई ट्रेड करा, उसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, हाँ, या तो ये सभी ट्रांजैक्शंस है, इसके अलावा कुछ और भी होता है इसमें इंक्लूडेड? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली होता क्या है, लेट्स से मैं आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी भेजा, राइट? सो लेट्स से कुछ एक एक 1 इथेरियम भेजा आपको, ठीक है? और 1 इथेरियम और टाइम स्टैम्प, मतलब मान लो कि आज 10 बजे भेजा आपको, तो ये दोनों पैरामीटर्स जो है इनपुट में चला जाता है, मतलब ब्लॉक में एक ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद इस सारे डिटेल्स जो है, जैसे मैं 1 इथेरियम भेजा, इस टाइम स्टैम्प में भेजा, फिर ये हैश होते हैं। फिर हैश बन के वो एक्चुअली उसका ट्रांजैक्शन हैश बन जाता है। जब उसको क्लिक करोगे आप, फिर उसमें यही सारे चीज दिखता है कि उसमें कितना एक्चुअली अमाउंट भेजा गया है, टाइम स्टैम्प क्या है, फिर उसके बाद उसने कौन सा माइनर ने इसको वेरीफाई किया है। तो ये होता है एक ट्रांजैक्शन। बट लेकिन माइनर के साइड से भी एक अलग ट्रांजैक्शन होता है। जैसे मान लो कि माइनर का काम क्या है, his work is to basically verify that particular transaction, right? सो वो उसका सिस्टम जो है वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए compete करता रहता है। ये compete क्यों करता है? बेसिकली मतलब ये वही रेस है कि जिसमें आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। मतलब जो भी माइनर को फर्स्ट ये वाला ट्रांजैक्शन मिलता है, उसको ही सिर्फ रिवॉर्ड मिलता है और बाकी सारे लोगों को नहीं मिलता है, राइट? सो माइनर भी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, राइट? फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इसका डिफरेंट हैश बनता है। फिर उस हैश में क्या क्या डिटेल्स रहते हैं कि उसने कौन सा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया है और कितने टाइम पे किया है, और मतलब कितना उसको फी लगा है। तो ये सब पैरामीटर्स माइनस के हैश में आते हैं। फिर ये दोनों जो हैशेस है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जैसे मेरा हैश में फिर इसका भी डिटेल्स आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर माइनर ने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया है। तो देर आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द वे यू लुक एट, लाइक मतलब यूजर के साइड से देख रहे हो तो अलग ट्रांजैक्शन बनता है, और माइनर के साइड से देखते हो तो वो अलग ट्रांजैक्शन बनता है। डज दैट मेक सेंस? Yeah, it does make sense. Thank you for the clarification. Yeah. One more thing I want to ask. ये मैंने टर्म्स सुने हैं, हाफिंग, फॉर्क हो जाता है आपके चेन में, हाफिंग हो जाती है। इस पे थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं इसके साथ 2-3 टर्म्स और भी हैं जो मैंने सुने हैं, बट वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से मीनिंग लगभग लगभग इनका मेरे को सेम लगता है। तो ये क्योंकि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे इस समय पाई है, काफी न्यू इमर्जिंग में है वो, तो वो चीज आप उसमें आपको हाफिंग दिखता है। लेकिन जब 2015 में बिटकॉइन चल रहा था, उसकी फॉर्क लगी तो वहां पे वो बिटकॉइन गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, साथ में अलग चेन चल गई। उसमें भी कुछ टाइम बाद वो नहीं संभाल पाई चेन, तो उसमें बिटकॉइन कैश भी आ गया। तो ये फॉर्क में, इन सब में ये एक्चुअल में होते क्या है और इनके डिफरेंसेस क्या हैं? हाँ, सो
फोर्क और आप जो पूछ रहे हो वो एकदम अलग है, हाफिंग अलग है और फोर्क अलग है, ठीक है। फोर्क में क्या होता है एक्चुअली, लेट्स से मतलब मैं ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि ब्लॉकचेन इज बेसिकली चेन ऑफ ब्लॉक्स, करेक्ट। तो फोर्क में क्या होता है, लेट्स से कम्युनिटी में किसी को कुछ चेंज करना है ब्लॉकचेन या बिटकॉइन इकोसिस्टम में, फिर वो प्रपोजल डालता है कि मुझे ये वाला चेंज करना है तो इसको अप्रूव करो, ठीक है। और जब वो अप्रूव नहीं होता है और मेजोरिटी ऑफ द वोट्स जिसके पास जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ये गलत है, ठीक है, और वो सभी देख सकते हैं कि कौन सा गलत है कि कौन सा सही है, करेक्ट। और जिस तरीके से मतलब वोट्स मिलते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल गलत को काफी ज्यादा वोट्स मिले कि भाई ये वाला गलत ट्रांजैक्शन है, उसमें मतलब मैंडेटरी ये हो जाता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब उससे पहले ब्लॉक तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे सही है, और करंट ब्लॉक से जो है वहां से फॉल्ट है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर मतलब जो आगे वाला ब्लॉक है उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक मतलब चेन सही रहेगा, फिर उसके बाद उसको फोक किया जाता है, मतलब चेन को तोड़ा जाता है, तोड़ के फिर वो अलग चेन बनाया जाता है, ताकि मतलब ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उस पर्टिकुलर ब्लॉक से सारा ट्रांजैक्शन फिर सही हो जाए, फिर इसी को फोकिंग बोलते हैं। और मतलब बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन गोल्ड इसी के कारण हुआ है कि किसी ने प्रपोजल डाला, फिर उसके बाद वो हो नहीं पाया, राइट। फिर उसके बाद उसको फोक करना पड़ गया कि मुझे अलग सा ही चेन बनाना है, बिटकॉइन से मुझे लेना देना नहीं है। You got it? या सर, काफी काफी हद तक क्लियर हुआ है। ठीक है। और हाफिंग का ये होता है, जैसे मैं माइनिंग का कॉन्सेप्ट समझाया कि माइनर्स आर लाइक रनिंग टू गेट द रिवॉर्ड्स फॉर आफ्टर वेरीफाइंग पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, करेक्ट। ठीक है। तो माइनिंग में क्या होता है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन इकोसिस्टम में, कि आप वेरीफाई करते हो ट्रांजैक्शन तो आपको बिटकॉइन में फी मिलता है, ठीक है। तो वो फी 5 ईयर्स के बाद और कुछ ड्यूरेशन के बाद वो एक्चुअली चेंज होता रहता है, मतलब हाफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 12.5 बिटकॉइन मिल रहा था अभी तक, ठीक है। अभी रिसेंट फोक के बाद मतलब हाफनिंग के बाद तो उसको अभी 6.5 किया जाए, मतलब माइनर को सिर्फ 6.5 बीटीसी मिलेगा आगे से, मतलब एक पर्टिकुलर हाफिंग के बाद, ठीक है। और वो फिर 5 ईयर्स के बाद फिर हाफ हो जाए, तो इसी को हाफनिंग करते हैं। क्योंकि बिटकॉइन जो है ना लिमिटेड सप्लाई है, मतलब 21 मिलियन ही सिर्फ बिटकॉइन है, तो वो हमेशा के लिए माइन नहीं किया जाता है ना, तो इसी के लिए रिवॉर्ड्स कम किया जाता है जाते जाते हैं। सर, एक चीज पे क्लैरिटी चाहिए थी कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या हम रिसीव मतलब डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर फी होती है जो कि नेटवर्क फी जिसे बोलते हैं ये लोग। एक तो ये है कि वो कुछ वॉलेट्स के लिए फिक्स होती है, कुछ लोग उसमें थोड़ा अपर भी रखते हैं क्योंकि कुछ प्रीमियम वॉलेट्स हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में नेटवर्क फीस जो है किस तरह से कट रही है, और ये लोग इसको जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कुछ वॉलेट्स हैं जैसे कि लाइट कॉइन है, लाइट कॉइन के जो वॉलेट्स हैं पर्टिकुलरली 2-3 मैंने देखे थे, उनका नेटवर्क फीस थोड़ा सा हाई रेट पे है। वही हम कॉइन बेस पे देखते हैं, या पुराना एक बीटीसी वॉलेट चलता था, अब तो मेरे ख्याल से शायद बंद हो गया या मुझे पता नहीं उसका। तो ये है, इनका थोड़ा एक स्टैंडर्ड है जो काफी सालों से मैं देख रहा हूँ, उतना ही नेटवर्क फीस है। तो ये नेटवर्क फीस का क्या वो है पूरा फंडा? हाँ, तो नेटवर्क फी का जैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग रहता है, इसमें दो चीज समझना है आपको कि नेटवर्क फी अलग है और एक्सचेंज फी अलग है, ठीक है। एक्सचेंज फी जो है वो एक्सचेंज चार्ज करता है वो अपने हिसाब से, ठीक है। और नेटवर्क फी जो है वो नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। जैसे मान लो कि मैं इथेरियम के बेस पे मतलब जो भी टोकन है या क्रिप्टो एक्सचेंज मेरे ख्याल से दो कॉइन्स के बीच में जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से एक्सचेंज होगा ना, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, एक्सचेंज रेट एकदम अलग है। नेटवर्क फी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है और फी ले रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट वो मतलब एक्सचेंज जैसे आप ट्रेड करना चाहते हो किसी को तो उस पे मतलब कितना परसेंट चार्ज करेगा एक्सचेंज, ये एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। और नेटवर्क जो रेट बोल रहे हो आप वो नेटवर्क डिसाइड करता है। जैसे मान लो कि मैं ईआरसी ब्लॉकचेन पे कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ
तो माइनर कितना चार्ज कर रहा है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, तो ये होता है नेटवर्क फी। थैंक यू। या गोलू, सब समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे सर से पूछ लो। सर जी एक तो क्वेश्चन था हमारा कि ई क्रिप्टो हमारे करेंसी सिस्टम पे का असर करता है और इसका भविष्य में स्कोप का है। हाँ, तो इसका बेसिकली मतलब काफी बड़ा स्कोप है। सो अभी देखा जाए मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से भी तो अभी जो क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू है और जिस तरीके से ये काम करता है, तो वो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है। लाइक इन केस ऑफ गवर्नमेंट्स देखा जाए तो उसमें काफी ट्रांसपेरेंसी मिस आउट हो जाता है, राइट। सो लेट्स से आप बैंक में जाते हो, कुछ एफडी कराते हो या मतलब पोस्ट ऑफिस जाते हो, आरडी कराते हो, तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है आपके पैसे के साथ, मतलब कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है आपके पैसे के साथ। एट द एंड ऑफ द डे आपको यही पता चलता है कि मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं उससे खुश हूँ, राइट। बट लेकिन बैंक क्या कर रहा है आपके पैसे से ये पता नहीं चलता, राइट। तो ब्लॉकचेन को यूज करके मतलब ऐसा एक यूज केस बना सकते हैं जिसमें यूजर जैसे अपन लोग जैसे लोगों के लिए फुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगा कि मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट भी आई थिंक यही चाहती है कि फुल ट्रांसपेरेंसी रहे और उसके बाद एफिशिएंट रहे, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी हो रहा है वो फुल डिसेंट्रलाइज्ड और मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ ही ये काम करता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट है तो फिर इसको कर लेना चाहिए। और जिस तरीके से मतलब लोग इस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उसके हिसाब से अडॉप्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे अभी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, करेक्ट। तो अभी इंटरनेट को अपन लोग अगर मान लो कि 1970s 1960s में अगर अडॉप्ट नहीं किए होते तो अभी इंटरनेट पे देखो कितने सारे एप्लीकेशंस हो रहे हैं और मतलब सब चीज़ ही इंटरनेट पे हो रहा है, राइट। सो वैसे ही एक मतलब होने वाला है कि आपको ब्लॉकचेन बेसिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो अबाउट क्रिप्टो करेंसीज आज रह सकता है और नहीं रह सकता है, बट लेकिन ब्लॉकचेन इज हियर टू स्टे। आप लोग सब स्टूडेंट्स हो तो आई सजेस्ट कि आप लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखिए और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। थैंक यू। हेलो It सर। was indeed a great session, sir. Thank you so much for sharing your views and thoughts with us. So, if anybody else is having any question or doubt, do raise your hands. Yeah, I had a question with me. Yeah. हाल ही में कुछ यूएस के बैंक्स हैं, उन्होंने रिपल को जो है कह दिया है कि हम इस पे ट्रेडिंग अब नहीं करेंगे और हम इसको डीलिस्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। तो इससे पहले भी कुछ कॉइन्स थे जिनको मैंने देखा था कि वो ड्रॉप हुए हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक्चुअल में हमारे पास ये वाली वैल्यू में है कॉइन्स और ये फिर कहाँ जाएंगे आपके नेटवर्क में? क्या इसको एक्सचेंज रेट मिलेगा या मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, या ये मतलब क्या है इसका, कुछ क्या सीन होता है फिर? हाँ, तो लिस्टिंग का यही मतलब रहता है कि मतलब टोकन कैसे जनरेट होता है ये भी मैं बता देता हूँ। सो टोकन बेसिकली आप डिसाइड करते हो कि कितना सप्लाई रहेगा, मतलब टोटल मतलब कितना नंबर ऑफ टोकन्स सर्कुलेटिंग में रहेगा, ये आप ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड करते हो कि इतना ही टोकन्स मार्केट में आएगा करके, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए रखा जाता है, जैसे टीम के लिए सम परसेंटेज रखा जाता है उसमें से, फिर मार्केटिंग, फिर डेवलपमेंट, ये सब के लिए अलग अलग रखा जाता है, करेक्ट। फिर एक्सचेंज के लिए भी एक ऐसे परसेंटेज रखा जाता है जिसमें कि टीजी के टाइम मतलब टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे बोला जाता है कि इतना एक्सचेंज रेट पे हम लोग इस पे लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो टोकन्स है कॉइनबेस के कस्टडी या मतलब जो भी एक्सचेंज के कस्टडी में रखना पड़ता है कि अगर आपके यूजर्स को अगर खरीदना है मेरा टोकन तो आप आके मतलब सीधा ये ऐसा खरीद सकते हैं, मेरे से कोई लेना देना है, मैं आपके कस्टडी में रख दे रहा हूँ इतना टोकन, ठीक है। फिर वो जब डीलिस्ट होता है तो ये जो सप्लाई है मतलब ये रिपल वाले ने जो दिए हैं कितना भी नंबर ऑफ टोकन हो एक्स वाई जेड, ठीक है, वो पूरा वापस किया जाता है टीम को।
कि इतना तुम मतलब वापस कर लो, रख लो, ठीक है। अब जो करना है करो, फिर उसके बाद जो भी इश्यू रिजॉल्व होने के बाद अगर हो सकता है कि मैं फिर से लिस्ट करूं, तो उस टाइम पे फिर से वो कस्टडी में लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेडिंग चालू करते हैं। I hope your doubt is Thank clear, you, sir. Thank you. everyone. So, thank you so much, sir, once again. And thank you, everyone, for this interactive session. Now, I would like to call Vedant, sir, to share his thoughts. Vedant, sir, can we have you, please? Oh, hello everyone. Thank you, Shreya. Actually, I'm here to remind you all that कि लास्ट कुछ दिनों से सीरीज ऑफ इवेंट चल रहे हैं जो बहुत फ्रूटफुल थे, और आज भी एक इवेंट है जो बहुत लर्निंग है। तो ये सारे इवेंट्स एक इनिशिएटिव के अंडर हो रहे हैं राम स्वरूप के, जो इसे बोलते हैं हम लोग हीलिंग हिंदुस्तान। ये एक बेसिकली एक फंड रेजिंग इवेंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक पैंडमिक के बीच में हैं, पैंडमिक आया है, वो चला भी जाएगा, लेकिन इससे जो सफ़र हुए हैं, इससे जो लोगों ने लूज़ किया है, बहुत सी फैमिलीज अनस्टेबल हो चुकी हैं, बहुत से लोगों ने अपने बहुत ही खास को खोया है। तो उनके हेल्प के लिए हम लोगों ने ये फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फंड्स आएँ और हम लोग हेल्प कर सकें अपने कॉलेज के लोगों को जो इससे सफ़र कर रहे हैं, और अपने क्लासमेट्स, अपने और जो भी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है इस समय। तो हम लोग हम लोग को अभी तक काफ़ी फंड्स आए भी हैं, और हम लोग आगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ये सोचे बिना कि हम कितना डोनेट कर रहे हैं, आप कितना भी अमाउंट डोनेट करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो आपका मिला के हर कोई इंसान अगर करेगा, जितने यहाँ पे मीटिंग में प्रेजेंट हैं या जितने भी रामस्वरूप कॉलेज में मेंबर्स हैं, वो सब डोनेट करेंगे, तो शायद एक बड़ा अमाउंट हो पाए और हम लोग किसी ना किसी की हेल्प कर सकें। तो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग कुछ ना कुछ डोनेट करें, जितना भी हो पाए। और आपके शायद आपको एक गूगल फॉर्म पूरे रामस्वरूप में सर्कुलेट कर दिया गया है, जिसमें आप अपने डोनेशन का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं, और हम लोग तक पहुंच जाएगा कि आपने कितना डोनेट किया या क्या आपका एफर्ट था। थैंक यू श्रेया। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. It was indeed a very valuable thought. So now it's time for the quiz. Let's see what we all have learned. But first, let us go through the rules. All the participants are supposed to type only yes in the chat box to get a chance to answer. The participant who will type first will be allowed to answer. All the rounds will be rapid fire, which means you all will not get more than 10 seconds. There will be total 15 questions in each round, and 2 points will be awarded for every correct answer. For qualifying round 1, participants need to answer at least 5 questions correctly. So, are the rules clear, everyone? So, let's begin the quiz. So here's the first question. Which of these countries is one of the current largest of miners of Bitcoin? China, Algeria, Spain, and Nepal. Satyam Singh, please answer. China. Okay, so next slide, please. Yes, the correct answer is China. So the next question. In which of the following countries is the use of blockchain currency banned? France, USA, Germany, or Bolivia?
Tanish Kumar, please answer. Bolivia. Okay, let's check out the answer. Next slide, please. The correct answer is Bolivia. So the next question. Which is regarded as the smallest amount of Bitcoin equivalent to 0.0000. Ethereum, Satoshi, min bit or small bit? Anybody with the answer? Please type yes in the chat box. Okay, Rashi Agarwal, please answer. Satoshi. Okay, so let's check the answer, please. No, it's wrong. Ethereum is the correct answer. So the next question. On what technology is the infrastructure of digital currency founded? Digital technology, blockchain technology, banking technology, or internet technology? Yes, Tanish Kumar, please Blockchain answer. technology. Let's check out the answer. Blockchain technology is the correct answer. Yes. Next question, please. The first decentralized digital coin was created in which year? 2008, 2009, 2013, 2011. Next question, please. What terms is sometimes used to refer other cryptocurrencies that are not Bitcoin? A coin, altcoin, haltcoin, or altcoin? Yes, Tanish Kumar, please answer. Altcoin. Okay, let's check out the answer. Answer, please. Altcoin is the correct answer. Well done. Next question, please. What is the name of first cryptocurrency which was made in 2009? Litecoin, Bitcoin, Darkcoin, or Rimcoin? Yes, Aryan Singh. Bitcoin. Okay, let's check out the answer. Absolutely correct. Bitcoin is the correct answer. Who created Bitcoin? Satoshi Nakamoto, Satoshi Ajinomoto, Satoshi Yakanami, or M.N. Roy? Tanish Kumar, yes, please. Option A, Satoshi Nakamoto. Okay, let's check out the answer. Satoshi Nakamoto is the correct answer. Next question, please. Where you can buy a cryptocurrency, a private transaction, any exchange, a Bitcoin ATM, or all of the above? Yes, Tanish Kumar. All of the above. Let's check out the answers. Answer, please. Yes, we can check out buy the cryptocurrency from all of the above. Next question, please. What are the different types of the tokens? Platforms, privacy, currency, or all of the above? Yes, Tanish Kumar, please answer. All of the above. Let's check out the answers. Absolutely correct. Others, please join the chat box and please answer to the questions. Thank you so much, everyone. This was the round 1, and let's see who are the qualifiers for the round 2.
So now it's time for round 2. First question, please. Just a minute, Janvi. Anushri Didi, please announce the winners of the round 1. हेलो श्रेया राउंड 2 के लिए कंटिन्यू करो. Okay, so let's continue to round 2. Over to Janvi. So now let's begin the round 2. First question, please. Who opened a blockchain innovation research? IBM, Microsoft, Ubisoft, Samsung. Yes, Aryan. IBM. You can answer. IBM. Next slide, please. The correct answer is IBM. So let's move to the next question. How are blockchain linked? Connection, GUM, software, cryptocurrency. Yes, Tanishq, you can answer now. Cryptocurrency. Yes, the answer is cryptocurrency. Next question, please. Does Bitcoin require bank transaction? Yes, no. It requires bank for final approval, Bitcoin approval from bit.org. Yes, Aryan, you can answer. No. The correct answer is no. Next question, please. Which was the first city in the world to install Bitcoin cash machine ATM? London, San Francisco, Berlin, Vancouver. Yes, Deepak, you can answer. It's D, Vancouver. Yes, absolutely correct. Next question, please. Which day is celebrated as Bitcoin Pizza Day? 4th July, 22nd May, 10th December, 5th February. Anybody? Yes, Aryan, you can answer. May 20. I 22nd of May. typed yes. Who said? 22nd of May. Yes, it is the correct answer. 22nd May. I already typed yes. Who's speaking? I'm Tanishq. Yes. Oh, sorry. I didn't realize. When was the blockchain was officially called blockchain? 2014, 2016, 2018, 2010. Yes, Tanishq. 2010. Sorry, wrong answer. The correct answer is 2016. Next question, please. What is a miner? A type of blockchain, an algorithm that predicts the next part of the chain, a person doing calculations to verify a transaction, calculators that validate and process blockchain transactions. Yes, Tanishq. Option D, computers that validate and process blockchain transactions. Yes, absolutely correct. Next question, please. What is a blockchain?
A distributed ledger on a peer-to-peer network, a type of cryptocurrency. An exchange, a centralized ledger. Yes, Tanishq. Option A, a distributed ledger on a peer-to-peer network. Yes, it is the correct answer. Next question, please. What is a Genesis book? The first block of blockchain, a famous block that hard-coded a hash of the book of Genesis onto the chain. The first block after each block halving. The second transaction of a blockchain. Yes, Tanishq, you can answer. The first block of a blockchain. Yes, absolutely correct. Next question, please. What is a proof of stake? A certificate needed to use a blockchain, a password needed to access an exchange, how private keys are made, a transaction and block verification protocol. Yes, Tanishq, you can answer now. A transaction and block verification protocol. Yes, absolutely correct. Thank you everyone for participating in the quiz. Now, I would like to request Ruchi ma'am to announce the winners. Sorry to interrupt, Janvi, but we will be announcing winners in the evening on our social media handles. So stay tuned till then. And now I would like to invite Bhaiya ji. पिंटू पिंटू आवाज आ रही है हमारी? हाँ भैया जी, ये तो तुम सही जगह लेके आए थे यार। बोले थे हम। अच्छा, हम ये सुने हैं कि ये हीलिंग हिंदुस्तान में भाई मतलब ऐसा डोनेशन वोनेशन का खेल है कि मतलब जो ना पैसा कलेक्ट होगा सब जाएगा लोगों की मदद करने के लिए। तो भैया आप सब लोग भैया डोनेट करिए भाई, जितना जिससे हो सके उतना दीजिए। Akash, can we have you So now, please? yes, ma'am. Now for the vote of thanks, I invite Shayan and Sneha. Thank you for giving us the opportunity to express our views with the vote of thanks. Finally, we would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Honorable Mr. Sai sir for his perfect explanation, support, and guidance he has extended to all of us at this wonderful Crypto Maniac webinar. We also extend our thanks to Honorable Veena ma'am for guiding us and our wonderful Tech Fusion team, promotional team, Munch Club, inaugural team, and screen sharing team for their enormous cooperation in organizing this event. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We are fortunate enough to be backed by a team of motivated and dedicated colleagues of Sriram Swarup who know their jobs and are always result-oriented. A big thanks to Golu, Pintu, and Bhayaji. Well, we cannot thank everyone enough for their involvement and completion of tasks beyond their comfort zones. Thank you, everyone. यार सबका हो गया तो सोच थोड़ी ज्ञानवर्धक बातें हम भी करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं